credible, knowledgeable. Trust Zia Abbas. Buy low and sell high with Zia Abbas. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़िया अब्बास। आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। हमारे आज के एपिसोड में आपकी मुलाकात सबसे पहले हम कराएंगे स्कॉट मैकलेलन से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं प्लाजा के। उसके बाद हमारे सेकंड गेस्ट होंगे एबियन कॉरपोरेशन से अमीन नूरानी, उनसे भी आज हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। और हमारे आखिरी गेस्ट आज होंगे बारबरा लॉलर, जो कि बेकर रियलिटी से है, उनसे भी हम बहुत सी बातचीत आज करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट गेस्ट की तरफ। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्कॉट मैकलेलन हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्लाजा के हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, ट्रेंड के बारे में इनसे पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड वी आर हेडिंग in a high rise for 2015. Scott, how are you? Wonderful, Zia. Welcome on board. Thanks. Great to be here again. Scott, there is a big challenge when it comes to a demand between investors as well as true end users. Investor thinks small units in a high-rise condominium is the best to invest, and true end users thinks no, bigger unit, two-bedroom units is the best to live in. So how you can balance out this tug of war? Well, you know what? There's a way to balance out the tug of war, and at Plaza, we think we've come up with a real hybrid solution in terms of the product. Yeah. And I'll get into that a little later. But a lot of the feedback that we get with respect to your opening comments about investors wanting smaller and end users wanting larger, we've seen a real interesting trend in the last couple of years, at least in our last couple of projects, with the opportunity to assign paper during the process. In other words, an investor that is buying and they're thinking, you know what, long term it's going to be a great rental opportunity, which it is. I mean, there's still a huge demand for rental product in the downtown core. But there may also be an opportunity to sell for 10 or 15% more in 3 years from now, that particular unit. And maybe they are finding it a little more difficult to get the same appreciation with a smaller unit. So they're starting to think a little differently. They're starting to think, you know what, maybe it is a two-bedroom. Maybe it is a two-bedroom in den. Or the hybrid solution that Plaza has, which is completely unique in the industry and unique in the marketplace, is a product that we have that we call, and we've sort of sub-branded it, our Soho product. So that is a one-bedroom, a very usable den as a sleeping alcove. So, you know, you have a small closet in there and an opportunity to put a smaller bed in there, or not a closet, and 2 bathrooms, which is paramount. So you're basically getting 2 full bathrooms, a kitchen, a 1-bedroom and a den, and a decent sized living area. And we'll always try and do that somewhere in that 550 square foot to about 580 square foot range, which is a lot less expensive than a 2-bedroom, a traditional 2-bedroom that might be 700 square feet or 685 square feet, yet it gives you all the same room dimensions, room sizes as a 2-bedroom does, but it's really a hybrid one and den. That is probably what we've done to meet the demands of the marketplace. And it's been a real interesting product launch in a number of our projects, dating all the way back to our projects in Liberty Village, through our projects that are now here at Wellesley, and product that we have upcoming, where we've introduced this product and reintroduced this product to sort of meet the demands and the questions that we have between that investor and the end user and what is actually going to work. And again, like, you know, if you can see the odds of 2-bedroom in the entire condominium building versus, like, you know, that particular 2-bedroom would compete, like, you know, with 1-bedroom, 1+ den and studio. So the amount of those units would be much lesser than the other units. So that itself brings the demand of a 2-bedroom, right? Oh, absolutely. And, you know, and the truth is you know, at the end of a project, after a project has gone through its selling period and the whole process, and now you get into a situation where you're actually occupying the building, it really is still only 25 to 35% investors that are using the product as rentals. Because during the time of construction, there are people that are assigning their unit, reselling their unit, if you will. And the end user is still the main driver of the product. Of course, yes. And you're seeing it in the resale market. You know, you put a 2-bedroom suite in the resale market in a brand new building right now,
it's not on the market very long. And you'll know that better than anybody, and so do a lot of the other brokers and realtors in the city. It's the same feedback we get. So, you know, the demand for real end users is still what drives our marketplace. I mean, at the launch of a project, yes, the investors are participating, and it gets us to a point where we can get our pre-sales and we can start our construction. But by the end of the process and we start occupying a building, you're basically seeing, pardon me, real end users and end users that are making buying decisions 5 and 6 months out. No, agree. And to me, I totally agree with you. The importance of an investor is no less than any temporarily bridge between the builder as well as a true end user. And after longest while, even myself, I'm getting a feedback from investors that, you know what, we should have to buy a 2-bedroom long back rather than like, you know, small 1-bedrooms. And these banks' guidelines for a certain square footage is still like, you know, a threshold that these investors should think about it. Definitely we'll see this trend in upcoming years, like, you know, how the trend of these 2 bedrooms like going around. One important thing is years back we were seeing 1 bedrooms over 1,200, 1,300, 1,400 square feet. And today, like, you know, a good functional floor plan can come up with 700, 750 square feet, but still it's a 2-bedroom. What you say about that? Well, I think that, you know, we've come a long way in terms of what we've learned about the condominium product. Yes. We build them a lot better. They are much more efficient. Yes. We are able to come up with products and kitchens and appliances and finishes where we can engineer product now in smaller spaces and still give you very, very decent living space. So as an industry with designers and architects and all the engineers and builders themselves, we've been able to come up with product that is much smaller, again, to meet one of the drivers of real estate, which is affordability. Yes. And we've been able to do that. We've been able to do it very well. And I think actually we've been able to do it better than probably anywhere else in the world. But that's maybe a biased comment on my part, but I truly do feel that way after seeing product around the world. And we've made it work, and it's acceptable, and it's a big part of our city. It's a big part of our industry, and it's certainly going to be a big part of where people decide to make their homes and make their homes their home based on the size of the product that we deliver. Exactly. Before I wrap quickly, now almost first 4 months of 2015 gone, and there's a lot of project held back because of the zoning situation. How you can see the last 8 months of 2015? Well, there's certainly a pent-up demand. Yes. We get calls every day. We're meeting every day with potential buyers, people in the broker community and the realtor community. There's a market there. Providing projects get through the political process, get through the zoning process, get through the whole process with respect to taking, you know, a piece of land, putting a sales office on it, and getting into the marketplace. There's a demand, and the city is, as we know, it's growing. There are people coming here. Their demographics are changing. It's a world-class city. We're ranked #1 on many different polls, and that's exciting. With our green belt legislation, intensification is still very, very important and paramount to the success of the high-rise condominium industry. And when there's not product that is being released in a regimented way, or at least in an orchestrated way, you're going to see a bit of a pent-up demand, and I think that's what's coming. Great, Scott. Thank you very much for your time. Definitely we'll continue in the next upcoming projects. नाज़रीन, जैसे आपने देखा, Scott said very well कि you have to see your investment portfolio from a true end user standpoint, कि उनकी क्या ज़रूरत है, how they see your portfolio down the road when you're going to hand it over to them. यहाँ से चलते हैं एक break की तरफ. Stay with us. Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos, in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening.
Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. इतना है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा चांस नहीं मिलता। हमेशा राइट ब्रोकर चूज करें। फ्री कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मोजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए। रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक। 2 दहाइयों पर मुईद बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा। जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। एबीएन एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, सीपीएस आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमीन नूरानी फ्रॉम ABN कॉरपोरेशन से हैं और इनके टिप्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे CRA क्रैकडाउन के हवाले से, तो गौर से ज़रूर सुनिए क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन भाई, इस वक्त जो एग्रेसिव क्रैकडाउन CRA की तरफ से है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस मेरे ख्याल में 2011 थ्रेशोल्ड है, 2011 के बाद जितने ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो लो राइज हो, हाई राइज हो, रीसेल हो, प्री कंस्ट्रक्शन हो, उसमें वो क्रैकडाउन कर रहे हैं सारे कैपिटल गेंस और साथ साथ में HST के लिए। तो इसके बारे में आज आप व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस और उनको क्या क्या करना चाहिए? थैंक यू जिया। जिया, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिंस 2013 CRA एक वर्चुअली एक ट्रांजैक्शंस को वो ऑडिट कर रही है सिंस 2011। ओके 2013 में इन्होंने काम शुरू किया है और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑडिटर्स हायर किए हुए हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना है। और उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स एंड प्रोग्राम मौजूद है जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस MLS में क्या रियल एस्टेट लिस्ट होती है तब से लेके टाइटल ट्रांसफ़र होते हैं तब से, एंड दे मैच ईच एंड एवरीथिंग। सो वर्चुअली दे कैन नॉट मिस एनी ट्रांजैक्शन कि जिसके अंदर अगर कोई हैंकी पैंकी वाह हो जो कि उनके लॉ के हिसाब से नहीं हो। सो बेसिकली उनके लिए मनी मेकिंग हो चुका है। तो एक अगर माइंडसेट पहले था जो अभी भी है, नहीं शायद हमारे रैंडम चेक में आने के चांसेस बहुत कम है, ये शायद हम बच जाएं। देयर इज़ नो चांस लाइक दैट। नो वे, राइट? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। बिल्कुल। और CRA जो है वो जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को वो ऑडिट कर रहे हैं और उनका जो ऑडिट का जो रीज़न है वो एज आई सेड इट्स अ मनी मेकिंग, और वो ये देख रहे हैं कि चाहे ये ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन की कैटेगरी में फ़िट होता है या बिजनेस इनकम की कैटेगरी में फ़िट होता है या जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उन्होंने ट्रांजैक्शंस कम्प्लीटली छुपा दिया है। तो इस तरह से ये वो ट्रांजैक्शंस पकड़ रहे हैं। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी ये बात की थी कि 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, कि प्रिंसिपल रेजिडेंस होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है या फ्लिपिंग ऑफ ऑफर्स होती है कि असाइनमेंट के अंदर प्रॉपर्टी बेच दी जाए, राइट? तो हम तीनों ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से वो इन चीज़ों को पकड़ते हैं। प्रिंसिपल रेजिडेंस के अंदर तो बड़ा सीधा है, हम ये समझते हैं कि हम उस घर के अंदर रहे
रहे हुए हैं तो हमें कैपिटल टैक्स फ्री हो जाएगा। मगर अगर आपका इंटेंशन उस घर के अंदर परमानेंट रहना नहीं है और उसको आपने बेचने की नीयत से लिया हुआ है, तो सीआरए ये देखता है कि हालांकि आपने वो प्रॉपर्टी ली है, आप उस घर के अंदर मूव हुए हैं, मगर 8-9 महीने साल के अंदर अगर आपने ये प्रॉपर्टी बेच दी है तो फिर वो पकड़ लेते हैं कि वो ये प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंशन बेचने के लिहाज से ली गई थी और उसके ऊपर वो बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट करते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं ट्रीट करते हैं जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन का अलाउंस मिलता है 50%, मगर दे ट्रीट दैट एज अ बिजनेस इनकम और 100% आपको टैक्स उस पर देना पड़ता है, प्लस 50% पेनल्टी भी लगाते हैं उसके ऊपर। जहाँ तक कि रेंटल प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, रेंटल प्रॉपर्टी में भी वो ये देखते हैं कि वो रेंटल प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए रखी गई है। अगर वो प्रॉपर्टी 18 महीने से मिनिमम, तो HST रिबेट के लिए मिनिमम 1 साल की रिक्वायरमेंट है, मगर वो ये देखते हैं कि अगर 18 महीने से पहले अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो देन दे ऑल्सो ट्रीट दैट रेंटल प्रॉपर्टी एज अ बिजनेस इनकम और आपको फुल टैक्स पे करना पड़ता है, आपको कैपिटल गेन अलाउंस नहीं मिलता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर वो ये देखते हैं कि आपने असाइनमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी बेच दी है और अगर आपने वो डिक्लेयर नहीं की है, हम समझते हैं कि असाइनमेंट की प्रॉपर्टी है जिसका पकड़ में नहीं आएगा और हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस उनके पास MLS की लिस्टिंग से वो देख लेते हैं और आज की तारीख में बिल्डर की रिक्वायरमेंट हो गई है कि बिल्डर को पूरी डिजिटाइज्ड कॉपी CRA को भेजनी पड़ती है। जितने परचेज एंड सेल एग्रीमेंट बने हैं उनकी कॉपी देखनी पड़ती है और फिर वो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। तो अगर परचेज एंड सेल एग्रीमेंट किसी और का नाम का बना हुआ है और अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है बिफोर द असाइनमेंट, तो फिर वो पकड़ लेते हैं और दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज अ बिजनेस इनकम और उसके ऊपर वो पेनल्टी लगवाते हैं। तो ये तो 3 कैटेगरी जैसे मैंने बताया आपको कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि इन 3 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो उनका मकसद ये होता है कि आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं बल्कि बिजनेस इनकम पे टैक्स पे करें, जिनके अंदर उनको पूरा टैक्स पे करना पड़ता है और प्रिंसिपल रेसिडेंस के ऊपर आपको छोड़ते भी नहीं हैं। फिर 3 और चीज़ें हैं ज़िया जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आजकल पहले रिक्वायरमेंट ये होती थी कि 3 साल से पहले CRA पीछे नहीं जाता था, मगर अब वो मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में उससे पहले पीछे भी जाता है और आपको दे कैन ऑडिट इवन फर्दर देन 3 ईयर्स। उसके अलावा रियल स्टेट एजेंट के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए हैं वो इसलिए कि रियल स्टेट एजेंट जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस जो है वो डिक्लेयर करने के अंदर, क्योंकि उनके पास कॉर्पोरेशन नहीं है, उन्होंने कुछ 2014 के बाद इजाज़त दी है, मगर उससे पहले उनके पास ये ऑप्शन नहीं था। और रियल स्टेट एजेंट अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो स्पेशली ऑटो लॉक के पीछे वो जाते हैं, होम ऑफिस बिजनेस के पीछे वो जाते हैं, मील्स एंड एंटरटेनमेंट के पीछे जाते हैं, सेमिनार्स वगैरह जो कंडक्ट करते हैं उनके पीछे जाते हैं। और एक और चीज़ अबाउट द HST रीबेट, अगर आपने HST रीबेट क्लेम किया है और अगर आपने प्रॉपर्टी 1 साल से पहले बेच दी है तो आपके ऊपर HST रीबेट तो आपका पूरा जब्त कर लेंगे, प्लस उसके ऊपर आपको HST और 13% लगाएंगे। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, राइट? आई मीन भाई इट्स अ वाइड ओपन जो है ये इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टाइम की कमी की वजह से हमें रैप करना पड़ेगा, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आपने देखा बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, यू माइट एज वेल डू एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ये क्रैक डाउन जो है बहुत एग्रेसिव है, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर अस, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस कंट्री में आपको अकॉर्डिंग टू बुक जाना होगा। यहाँ से हम चलते हैं बारबरा लॉलर की तरफ। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बारबरा लॉलर है, प्रेसिडेंट बेकर रियल एस्टेट। इनसे हम बातचीत करेंगे और आपसे एक बहुत अच्छा न्यूज़ शेयर करेंगी। बारबरा, हाय बारबरा, हाउ आर यू? I'm great, Zia, thank you. How are you? Not bad, thank you very much. I know you have quite excitement in terms of that record we broke recently from last 10 years. What it is? Oh, yes. Well, the results, the real net results of the new construction home market were released yesterday. And we have broken the 10-year average with over 8,500 sales. And the 10-year average sits at 7,800. So it's a really great, solid start to 2015. And we're very excited. No, that's great. Investors.
foreign investors, international investors, we recently seen their penetration is quite a lot in a Greater Toronto area. They invest a lot. That's a really good news for Canada, really good news for Toronto. But what you say to a local investors, what they should learn, out of these transactions which is happening among international investors? Well, I think we need to pay attention because these big scale, like big banks, REITs, pension funds, private equity funds, all these big players are seeing the opportunities in our marketplace. And our next door neighbor and our the guy on the ground here in Toronto is kind of missing the boat a little bit. I think they need to be paying attention to investment opportunities in our new construction condominium market. It is, after all, the rental market in Toronto. The condo market is the rental market. And we have a very low vacancy rate. So there will be tenants there to rent their apartments when they're built. But I think the best time to get in is when we come out of the gate, when we launch a new building, when you have the best choice of price, the best choice of suites, that's the time to get in. And I think we need to pay attention because a lot of big players are paying attention. At one point, they are listening the media and it's all negative. On the other end, when they came up with this or when they see these numbers, these are all genuine numbers, which is really rising. Yes. So who they believe and how they can, bring or motivate their energy to jump in towards these investments? Well, I'm telling you, Zia, I mean, good news doesn't sell newspapers, so for sure, most of the headlines tend to be very dramatic and tend to be like anxiety causing, and that's what sells newspapers. But the reality is the numbers that we're talking about. And I think that people need to turn to their real estate broker, like yourself, and to speak to their real estate broker and understand the actual numbers that our industry is posting and jump in and not be afraid to jump in. If you look back over the past 10 years in our industry, you can see that there have been gains every single year, whether it was as low as 3% or as high as 8%. There have been many years in between. So it's a great way to make money. And it is far more tangible than stocks, which a lot of people are not comfortable with that. Yeah. First 4 months of 2015 gone almost. Now we're in the last 8 months. What would be an excitement coming from a Baker platform in terms of a new project? We have just launched a fabulous project on Shepherd Avenue, right at Bayview, right on the subway, right on the Bayview Village Shopping Centre. I mean, it's gold dust to be on the subway line and to be opposite a fabulous shopping centre like the Bayview Village Shopping. It's so fabulous here. And we had an amazing launch. There's an Origins restaurant in the Bayview Shopping Centre. We had 700 agents come to that lunch. It was amazing. And so we've just launched that, and there are opportunities there that are pretty fabulous. And our next launch is it's called East United Condos. And it is at Berkeley Street. It is actually going to be built on the historic site of the old Christie's Cookies factory, from going back 150 years ago. So they will maintain the historic facade. And that is, on Berkeley Street between Adelaide and Richmond. And we're going to probably come out in the middle of May of this year. And wonderful investor opportunities, really efficient floor plans, and great prices. I really believe that the east side of Toronto is going to explode in 2015. I mean, we're already seeing it with Canary Park, where they're going to be housing the whole Pan Am Games, the Para-Pan Am Games, and the whole world is going to be watching the East End. It's going to be a world focus. For sure. Barbara, thank you very much. We have to wrap up because of the shortage of time, but it's always a pleasure to talk to you because there's a lot of information from your end, a lot of energy to viewers, and we'll keep continue
the same energy level in upcoming episodes. Thank you very much. नाज़रीन, जैसे आपने देखा बारबरा ने बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन आपके साथ की. आप इसे देखें, इवैल्यूएट करें. यहाँ से हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. स्टे विद अस. एबीएन एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मुशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो. गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, सीपीएस आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं. Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the JD Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. You work hard, you dream, you wish to protect your family now and in the future. You wish to retire comfortably. You are a highly paid professional and would like to reduce taxes and grow wealth. Call Zahid Sayyid, the chartered life and registered health underwriter at 905-624-0008. Thank you. रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है. आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है. अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें. Great Condos, the hottest new condo launch in downtown Toronto. Its incredible location, highly efficient suite designs and great pricing makes it a great investment opportunity. Situated near Canada's fastest growing university with over 40,000 students, Ryerson University. Great Condos will have tremendous demand, fetching high rents from students, faculty and staff at Ryerson University. Incredible offer pricing for the first round of buyers. 2-bedroom $300,000, 1-bedroom and dens from low $300,000, 1-bedroom $200,000. Act fast as all of Centre Court's past 4 developments sold out in a matter of weeks. For more information, दो दहाइयों पर मुई बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा. जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं. Hi, I'm Zia Abbas introducing the first 2015 condominium project Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. Welcome back. So, you've decided to become a renter. There are many reasons why people choose to rent rather than purchase. This is a personal choice. There are plenty of appealing properties out there on the rental market. In fact, the rental market is highly competitive. It is wise that you arm yourself with some documentation before you start your search. You are going to need references. You're going to need a credit check, employment letter, and the ability to put down your first and last month's rent. You also need to be prepared for the commitment of at least 1 year lease. Of course, you have the option to renew it after that, but typically a lease is for 1 year. With all of this in hand, it's going to make your search for the rental a breeze. Back to you, Zia. नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा. उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी प्रोग्राम के हवाले से आज जो आपने स्कॉट मैकलेलन से सुना, AAA लोकेशन की डेफिनेशन चेंज होने जा रही है. जिन्होंने आज से 10 साल पहले और या उससे भी पहले इन्वेस्टमेंट्स की है AAA लोकेशन पे, शायद उन्होंने ये सोचा होगा उस वक्त कि इस वक्त इसकी कीमत शायद इक्विवेलेंट टू गोल्ड है. लेकिन आज के डेट में उनका जो AAA लोकेशन है, उनका जो प्राइस है वो डायमंड से कम नहीं है. आप अपने इन्वेस्टमेंट को AAA लोकेशंस के हवाले से ज़रूर देखें कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है. मुझे दे इजाज़त. अपने ईमेल ज़रूर हमें भेजा करें, फीडबैक दें. अल्लाह हाफ़िज़. Buy low and sell high with Zia Abbas.